सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सायरा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਟ ਸ਼ੋ ਸਵੈਗ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। And today we have them again. They again Toofan hi leke aa rahe ne, and with them joining is the very talented and gorgeous Mrunal Thakur. Hi Mrunal, hi Farhan, and hi Rakesh sir. Hello. Hi Sarah. How are you? All good. How are you? Thank you. Sab to pehla, the teaser, the trailer is superb, and also this is like a very one-to-one thing. I really wanted this film to be in the theaters because the action, the music, everything is so huge. वो theater वाली feeling है. So I know ये OTT पे release हो रही है. What is your response to this? हम अभी तो घर घर में थिएटर पहुंच गए हैं और छोटा पर्दा जो है वो बहुत बड़ा हो गया है एंड सायरा वी हैव टू गो विद द टाइम्स एट दिस मोमेंट देयर इज नो होराइजन ऑफ थिएटर्स ओपनिंग एंड our film has been ready for a couple of months now, and we earlier it was pandemic, so we didn't want to bring out the film. Now that things are getting better, more under control, we want to share it with the audiences. हाँ, थिएटर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, उसको आप किसी भी तरह से डुप्लीकेट नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट अपने घर में फिल्म देखना भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है। आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने टाइम से भी देख सकते हैं। जो आपकी सहूलियत है, आपकी कन्वीनियंस है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तूफान मेरे ख्याल से पहली फिल्म है, पहली फिल्म ऐसी नहीं है जो OTT पे जा रही है, बट जो जिसको इतनी बड़ी रिलीज मिल रही है। राइट। अमेज़न प्राइम का जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ 200 देशों में, 240 टेरिटरीज में, हमारी फिल्म अंग्रेजी में भी डब हुई है, तो उस ऑडियंस को भी जाएगी। तो शायद इतनी बड़ी रिलीज थिएटर पे पॉसिबल नहीं होती, तो देयर इज अ गिव एंड टेक। आपको कुछ मिलता है तो आपको कुछ खोना भी पड़ता है। Right. I have a question regarding this, but we'll come to that later. Pehle we'll talk to Farhan. Farhan, jo I think everybody is talking about the physical transformation that you have gone through. But personally, I just wanted to ask ki, there's a lot of mental transformation also. A person, a gali ka gunda, when he's transforming into a boxer who's very disciplined and all of that, a sports person has to be really, really disciplined. So that mental transformation phase, what was that for you? That is a very, very good question and a very interesting question, because honestly, what people see is the physical transformation, what they see is the physical change, but you're absolutely right. That can only happen if how you think changes. Yeah. How strong you are here will reflect in how strong your body is. That really is the focus in any training, or if there's anything that you choose to be good in, that is what you have to do. You have to inculcate the discipline for it. The discipline can be boring, it can be monotonous, it can just be routine, it can really at times almost like kind of the routine of it could demotivate you to get up and go and do it again and do it again and do it again. But that's what makes I guess people who are good at what they do, that's what makes them good. So when you're playing a boxer, or when I'm playing a boxer in this film, who is someone who's working towards becoming a champion, who's working towards a better life, a better tomorrow for himself, for his family, for people who care about him and he loves. It was important for me as an actor to also put in those hours and put in that work, and be able to. So when people see it on screen, जब आप पर्दे पे कुछ देखते हो, तो जो सच्चाई है परफॉर्मेंस की, अगर है वो सच्चाई, तो वो सच्चाई आपको दिख जाती है और वो आपको छू लेती है। बहुत परफॉर्मेंसेस हम सब ने देखी हैं जो हमें लगा है कि यार ये कमाल हो गया, क्योंकि वो इंसान ने, वो आदमी हो या औरत हो, उसने अपने आप को सिंसियरली अप्लाई किया, एक सच्चाई के साथ एफर्ट और एक काम किया है। और जब नहीं होता है वो भी हम पहचान लेते हैं कि सब ऊपर ऊपर से हो रहा है काम। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप किसी की जर्नी देखोगे फिल्म में, और अगर आपको उसको ठीक से समझनी है और ठीक से मतलब महसूस करनी है, तो फिर उस एक्टर को करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट है नहीं।
Mrunal, now coming to you, though reasons are so that why you chose Toofan, other than these two reasons that are sitting right there with you. एक्चुअली ये ही दो रीजंस है जिसकी वजह से कर रही हूँ लेकिन अगर मैं कहूँ तो अनन्या चोज मृणाल क्योंकि हमेशा एक जो कैरेक्टर होता है उसकी कुछ डिमांड्स होती है वो एक उसको स्ट्रॉन्ग अगर अनन्या स्ट्रॉन्ग है तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो शी इज एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग अनन्या शी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स इज वेल कभी कभी स्ट्रेंथ किसी को देने के लिए भी आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप दे सको अगर अगर टीपॉट there's no chai in the teapot, what will you give, so similarly I would say I'm quite grateful for the I'm thankful to the writers and Rakesh sir that they wrote such a powerful कैरेक्टर क्योंकि लड़कियां वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ देती है लेकिन दे आर and also in Bollywood industry there are not many girls who've been shown independent. So I think Ananya, she's independent, she's a doctor, and one of the reason why she's a doctor is also because there are a lot of problems in her life that she's had, but how to channelize, how to bring out positivity, that's who actually Ananya is. She wants the people around her to be inspired, to make them smile, and Ananya's agenda is अगर 10 लोगों के चेहरे पर एक दिन में अगर वो स्माइल ला सके तो कैसे, आई मीन दैट्स हु अनन्या इज. और बहुत कम लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें ट्रैक पर लेकर आते हैं. सो अनन्या इज वन ऑफ देम एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच अनन्या, ट्रस्ट मी, एंड द एंटायर. Yeah, same here. Mrunal, आपकी अभी तक की जो films थी ना, it was like very character based, बहुत मतलब they had something to say, they really had something to say. But this is Ajju's journey. Basically अगर हम देख रहे हैं बाहर से तो this is Ajju's journey from all the transformation, physical, mental, everything. So मतलब इसमें you are just he is the primary character, right? So why did you choose this film ki chalo okay, maybe this is not my story, I'm a part of his story, I'm a part of his journey, but I should be there, this should be Mrunal's film. कोई भी स्पोर्ट्समैन जब रिंग में उतरता है या फील्ड मैदान पे उतरता है तो वो एक पूरे जो लोगों ने उनको सपोर्ट किया वो पूरा रिप्रेजेंट करता है. मुझे एक अच्छी कहानी का हिस्सा बनना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्में लोग ना जस्ट देखे बट हमेशा याद रखे उसे, मेरा काम कभी भूले ना. सो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच हैज़ गुड स्टोरी. और सोने पे सुहागा ये था कि द कैरेक्टर ऑल्सो टर्न आउट टू बी ग्रेट. और दिमाग में जब मैं राकेश सर से मिली मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ फिल्म करूं, लेकिन बाकायदा जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वी नेवर स्पोक अबाउट फिल्म, वी ओनली स्पोक अबाउट लाइफ. एंड फॉर मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम was an achievement in itself, because sitting in front of Rakesh, Omprakash, Mehra was like a dream come true. Entering in his office, the entire vibe, you could see the national awards, Rang De Basanti, it was a very overwhelming process. और फिल्म मिले या ना मिले वो अलग बात थी, लेकिन उनके साथ बैठकर मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी और ज़िंदगी के कुछ किस्से उन्हें सुनाए. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि आज इस मंच पर दोनों के साथ मैं बैठी हूँ. बहुत भाग्य लगता है, बहुत लक लगता है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. Farhan, we were talking about that thing, OTT release and all of that. Rakesh sir and you both are the producers of the film as well. So there's no box office collection as such now. The things have changed dramatically. There's no one telling you that this film did well, is film ne acha kiya, bura kiya. Now there's a new thing. Actually, this is not a new thing. Critics used to be there, but I've heard a lot of times actors used to say कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, critics का नहीं मैं देखता, मैं box office collection देखता हूँ. And now suddenly जब OTT strong हो रहा है तो critics have a lot of say, because people go to their channels and see अच्छा क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है ये ठीक कह रहे, देख लेते, why to waste time. So now suddenly critics are even powerful people, So what is your take on the critics now? The thing is, I feel in today's world, especially in the social world, everybody has the power of a critic. जिसने भी film देखी can post a blog. Anybody who watches the film can tweet a review or put a video out about what they feel about the film. So, and film is so subjective that two people sitting next to each other and watching the same film
will take something different from it or experience something different. So you cannot base your opinion of your work purely on what somebody else thinks of it. Firstly, you have to respect the work yourself. और ये कामयाबी भी सोचनी चाहिए क्योंकि फिल्म जब बनती भी है तो उसके बनने में भी एक कामयाबी है कि इतने सारे लोग आए, एक इरादा था, एक आइडिया था जो फिर किसी ने लिखा, फिर किसी ने सोचा कैसे करेंगे, फिर कास्ट जुड़ी, क्रू जुड़ी, सेट पे शूटिंग हुई, एडिट हुई, साउंड हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतनी सारी चीजें हुई. उसमें भी तो एक कामयाबी है कि कुछ we made something out of nothing. 100%. You know, so I feel what's important in this is to enjoy the fact that you have created something, to feel proud of the fact that you are happy with what you set out to do. और अगर अच्छे reviews आए, of course everybody appreciates it and you love it when people like your film. And if somebody has something to say, if it's positive criticism, you'll take it in your stride, hopefully learn from it and educate yourself further better. You know, but that to me has never been the benchmark of what I feel my film is worth or the value of my film is. I would say the same thing even about the box office. You know, I feel films are beyond just the immediate response to them. कि फिल्म जब रिलीज होती है हफ्ते में तो बॉक्स ऑफिस के नंबर आते हैं और क्रिटिक्स के रिव्यूज आते हैं, लेकिन फिल्म तो हमेशा रहेगी. तो 20 साल बाद मतलब कभी कभी हम उठ के देखते हैं यार 20 साल पहले वो जो एक फिल्म बनी थी कितनी माइंड ब्लोइंग फिल्म थी, कागज के फूल के साथ क्या हुआ, यू नो, फॉर एग्जांपल लम्हे के साथ क्या हुआ. when you look back, तभी दो फिल्म्स वर नॉट ग्रेट फिल्म, मतलब एवरीबडी थॉट नहीं इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, नहीं चली, ये वो नहीं हुआ. बट फिल्म इज बियॉन्ड दैट. तो थोड़ा हमें वी हैव टू स्टेप बैक एंड लुक एट इट. वी कांट भी इतना, मतलब हम इतने नजदीक से नहीं देख सकते कि आज जो हो रहा है वही सही होगा. So you believe in a bigger picture. Absolutely. Right. Rakesh sir, you being a swimmer yourself, a sports person yourself, is that one thing ki bar, you know, it drives you to make more sports films? And also, what is that one reason that you, because Bhag was a success, definitely it was a huge success, but again working with Farhan, how was that idea कि okay फिर से एक sports film बनाएंगे, फिर से फरहान के साथ ही बनाएंगे? Or do you think that Farhan is the most dedicated person, because you need a lot of dedication when you have to make a sports based film? So क्या आपको ये लगता है कि okay Farhan is that one person जिनके पास जाऊंगा, he'll put all the dedication in the film and I'll get the best? You've asked a million questions in 2 questions. Given the limitations of time, I'm extremely fortunate that we got to make a film together in Bhag Milka Bhag, and then life has presented me with another opportunity to collaborate with Farhan. The idea came from him. The germ of the idea of the story is Farhan's. So he called me one day and for 15-20 minutes we spoke about it, and immediately I felt the film is talking to me, the story is talking to me, I can have a conversation with it, it has a voice. मैंने बोला फरहान ये करनी चाहिए हमारे को, ये बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है. और इसको फिर उतना ही था कॉन्वर्सेशन. फिर उसके बाद हम अपने अपने काम में लग गए. लाइक फरहान वाज सेइंग द प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट, द जर्नी इज योर डेस्टिनेशन. तो वो दैट जर्नी वाज इज जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड कीप डूइंग one thing at a time, one day at a time, you know, 1 week at a time, 1 month at a time, and slowly things, the universe starts conspiring. You can only do what you can do, as best as you can do. So yes, it's not ki, I think it will be belittling the fact कि एक स्पोर्ट्स किया तो फिर एक और स्पोर्ट्स करेंगे. ऐसा नहीं था, वो कभी भी नहीं था. कहानी क्या है, जब हम मिल्खा सर की कहानी बता रहे थे तो द मेन थॉट वाज नॉट कि अबाउट एन एथलीट. द मेन थॉट व्हाट वी डिस्कस्ड अगेन वाज अबाउट दिस 12-year-old बॉय हु विटनेस्ड द मैसेकर ऑफ हिज फैमिली. उसने अपनी आंखों के आगे सब कुछ देखा पार्टीशन के टाइम. किसी तरह दिल्ली पहुंचे और कैंप में रहे, और पहनने को जूते नहीं, सर पे माँ बाप का साया नहीं, घर नहीं, छत नहीं, खाने को रोटी नहीं. फिर वो आगे चल के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, कार्डिफ, ओलंपिक्स जाते हैं और इतनी बड़ी हस्ती बनते हैं. तो
एक स्टोरी पार्टीशन की भी थी, उस दुख की भी थी, और उसके अंदर से एक जो देश कौन, तो वो कहानी ने हमें जकड़ा था, ना सिर्फ एथलेटिक्स ने। मिल्खा सर की ऐसे ही तूफान में जो अजीज अली की जर्नी है, जो अनन्या का कैरेक्टर है, वो इज ड्रॉन। अब ये बायोपिक तो है नहीं, किसी रियल हस्ती पे नहीं है फिल्म, इमेजिन की गई है, बट वो इमेजिनेशन पूरी रियल लाइफ से ली गई। सायरा, जब आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका एक हिस्सा अज्जू भी है, आपका एक हिस्सा अजीज अली भी है, आपका एक हिस्सा अनन्या भी है। तो you will find yourself in the ups and downs and conflicts of the characters in the film. Lovely father-daughter story. There's a grandmother-granddaughter story here, even though they are not related as granddaughter-grandmother. The boy-girl and the man-woman story is something I would say that this is what I want my woman to be. This is what gives me the power. This is why I am the reason to be. So Ajju and Ananya are the reason to be for each other, and they transcend time, they transcend everything. So वो सब है। तो हाँ, उसमें जब the device was boxing, it became even more challenging. Yeah. More for Farhan than for me. So, you're not just, if emotionally this film is also very violent. When I say violent, it is very rich. And even as a sports, it's very rich, but emotionally also it has a huge journey for the characters. So, wo tha. So we'll be wrapping up this interview on a very good, happy note. All the very, very best. I am definitely going to watch Toofan, and I wish ki sab dekhe and this film does wonders. OTT platforms were one of the best ranking wali film ban jaye. And before you guys leave, please say something to the Punjab audience that they have to watch Toofan. You only said it yourself. You have to watch Toofan. Just from my end, would like to say thank you, honestly, for all the years of incredible support, that we have received, and that gives us the courage, that gives us the freedom, and that gives us, it empowers us to make the films and tell the stories that we say. So I do hope that you will enjoy this film, because it is made with your love and with your blessings. So thank you. So Rakesh sir, you've been to Punjab. Jab Rang De Basanti, you made Rang De Basanti. You've been here. You have been associated with Punjab again. Then for Bhag Milkha Bhag also, you were associated with Punjab in some or the other way. What is that one thing that you really, really cherish about Punjab ka dharti, Punjab ka land? What is that one thing? I think कुछ है पिछले जन्म का लेन देन, बिल्कुल। And it's a blessed land, but it's what makes Punjab Punjab, and I would say it's the only place in the world, not like other places are not great, but unique, is the people. Is the people of इतना प्यार। मुझे आज भी याद है कि जब हम भाग मिल्खा भाग की लोकेशंस देखने जाते थे, तो फिरोजपुर के इधर गांव में ढूंढ रहे हैं, उधर गढ़पताना के इधर, ये सब वो सब। तो किसी से पूछो कि अरे वो वाला वो बताया वो खेत कहाँ मिलेगा, ऐसा करके एक हवेली बताई थी, तो आंसर ये होता था, रोटी खाई कि नहीं? पहले नहीं खा ली, अच्छा लस्सी पी के जा। तो मतलब मैं जाता था पंजाब कुछ 75-76 किलो का, जब लौटता था तो 86 किलो का होता था 1 महीने के अंदर। So वो मतलब the प्यार is shown to you in your weight gain. That's right. Thank you so much, sir. It was lovely talking to three of you. Thank you. All the best once again. Thank you very much. Yeah. So ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨੀ ਜੋੜੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਤੂਫਾਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਰੂਨਾਲ ਠਾਕੁਰ। ਵੀ ਆਰ really ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਤੂਫਾਨ। ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸਵੈਗ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ। ਫॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।